Hello, welcome, namaste, welcome to a channel Football Fantasy और the Wednesday night show जो हम हमेशा करते हैं. We are back again and lots to talk about. Most importantly, the transfer show. Transfers जो players linked है to club and players who are almost signed for a new club, bids rejected. There are lots to talk about. Of course, Antony का subject सबसे hot topic है फिलहाल. And we're also going to discuss about Alexander Isak's link to Newcastle and Pepe going on loan to Owen Nice. So lots to talk about transfer में बहुत. I mean Hmm. एक हफ्ता बाकी है तो ये तो expected है ना. अग्रिम भाई क्या बोलते हो? Last, I think it's now today's 24th, now, so I think 7 more days Hmm. left for Correct. the transfer window to shut. And I am really hoping, like there should be one like marquee signing probably in the Premier League. One, I feel, Hmm. like one big name should actually come. By the way, I just wanted to add, Leandro Paredes and Nam has been listed for Liverpool to take him as a Yeah, potential he might be midfield interested. guy. Yeah, this वो was interested हो reported by सकते हैं. the Correct. Liverpool Echo. Hmm. MJ says But hello, anyways, hello to you, continue. MJ. Hi, Yeah. MJ. Okay. So yes, which team to support in Premier League? भाई सपोर्ट करो जिसको Brighton. आपको सपोर्ट करना है. ब्राइटन. Brighton करो इस बार. न्यूकासल भी कर सकते हो भाई. न्यूकासल भी अच्छा है. Yes, Newcastle has been very good this न्यूकासल है, season. ब्राइटन Yeah. है. ब्राइटन का पास बहुत ही बढ़िया मैनेजर है. Hmm. ब्रिलियंट, अंडररेटेड है बहुत. और बहुत That's true. फैंटास्टिक मैनेजर बनेगा. आई एम श्योर ही विल टेक चार्ज ऑफ टॉप फोर क्लब, टॉप सिक्स क्लब, That's true. टू करेक्ट माई सेल्फ. तो एक ना एक दिन जरूर मैनेजर बनेगा ग्राम पॉटर. बट आप बात करते हैं ट्रांसफर्स की. एंड द बिगेस्ट लिंक ऑफ द डे, एंटनी, विच इज आई थिंक इट्स गोइंग ऑन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. Hmm. विंडो के स्टार्टिंग में थोड़ा परस्यूट थोड़ा हॉट हुआ था, बट थोड़ा उसके बाद Yeah. थोड़ा लिंक्स कूल हो गए. एंड देन नाउ after the defeat to Brentford, United started getting linked to a lot of players, and of Yeah. course we did end up signing Casemiro, and now Antony has Hmm. been linked. और सिचुएशन जानते हो आप अग्रिम भाई. वो बेसिकली ही इज नॉट ट्रेनिंग, और उसने और Yeah. ट्रांसफर रिक्वेस्ट जैसे ही बोलो डाल दिया है. उससे जान मतलब That's true. ही वांट्स टू गो टू यूनाइटेड. सो क्या लगता है आपको, 94 मिलियन वर्थ है? मतलब ये has this like been reported by like credible reporters including Romano? That should be the first question. Let's No, see. I yes, mean, yes, it is credible. okay, so my point is like if he is being hell bent on not training and he just wants to transfer, I think just let him go. I mean it will be a Mhm. good thing for both the parties, in my opinion. Barcelona says MJ. Yes, Every 100 million player is a scam. अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है not पिछले really, 2-3 सीजन से. not really. हाँ हाँ. मतलब अभी का बोल सकते हो like this all, by the way, हम्म. this 100 million scam has been started by Gareth Bale, just to add. Yeah, because उसके नहीं बट उसके टाइम यार. से नहीं, हाँ. उसके टाइम से तो 100 million का तो इतना पंगा हुआ है ना. लाइक 100 million फॉर गैरेथ हम्म. बेल, देन 80. आई अंडरस्टैंड, चल 80 million फॉर सुआरेज दैट टाइम वाज वर्थ द मनी. हम्म. And हम्म. possibly even for like Van Dijk paying 75 to हम्म. 80 million. 75 मिलियन, But हाँ. you're just going out there and spending money like 150 million on Dembele, Coutinho, Griezmann, another 120 million, and पॉगबा. Jack Grealish. Yes, Pogba. How much you guys paid for Pogba? नहीं, अराउंड 90 मिलियन, अप्रोक्सीमेट Almost 90 100 मिलियन, million. 88-90 मिलियन. Almost. हाँ, तो वो Yeah. उतना ही था. And और आई थिंक then you एडन paid, हजार्ड. yeah, एडन 100 हजार्ड. million again. 100 million. And ग्रिलिश. also Jack Grealish 100 million again. So I don't think, unless, the club wants to have like some sort of, or should I say, like a financial benefit, like, oh, this is our like biggest asset and we can sell him out for like 100 or 150 million. That is the like primary target these days. Yeah, absolutely. I mean, coming back to Antony's thing, I mean, he's a fantastic player. And Yep. like I've said in my previous streams as well, he's a good player.
but Yep. the 100 million price tag, that's because Man United have Mm. acted very late. Ajax at this point That's it. have done all the transfer business. They are of course a selling club. They want to they have a strategy. They develop young players. Mm. They buy players who no one have Yep. heard of. They develop them into a very their academy and everything is really good. Setup is fantastic, and players True. turn into good players and leave for big clubs like Bayern, United, Real, Barcelona. So that's what they do, and they don't expect to keep hold of players. But then they have a Yeah. strategy wherein they want to do business before Mm. so and so fixed particular date because they also would like to bring in the replacement. Maybe a not expensive Yep. one, but absolutely another young player who they can develop. But when you ask them that they whether they want to sell their most important player in the squad, even for 100 million, they will have to look at the replacement. You know, Yeah. so which is a very short period of time, around a week and 10 days to go. So again, that's why Ajax are a little bit reluctant, even though United are willing to go above 84, 85 million. From what I'm hearing, Yeah. is 94 million euros, which also includes the add-ons. So the maybe the payment Mm. structure may be set up in such a way that United don't end up playing a huge amount upfront, but Yeah. the add-ons and bonuses, including everything, that goes up to Okay. 94 million euros, which I think is a big amount, but it's Mm. all about backing the manager. So at this point in time, I think Yeah. they want to back the manager. Situation is not good with the fans and have turned on Glazers. The Glazer out movement is, getting support from all over after, especially after Sir Jim Ratcliffe claimed that he would like to buy United if United is for sale. So, they are under pressure and Yeah. they are looking to spend money. So that is the only Mm. reason. And of course, it's now what 7 days to go. So Ajax will milk out money. So you can't blame Yeah. Ajax as well. That's it. But yes, definitely not 100 million player. At the max, 50 Mm. million is what I think is Antony is worth for. But 60, do United 60 have a is still choice? fine. 60 is still fine in my opinion. Because just because it's 100, then like Hmm. 50 million should be like 60 million that way. Correct. I mean, 60 million plus add-ons if you could add. But I still think that's way too much, 50 million. And if you compare Anthony's stats with another player that's been linked to United, Gakpo is way better Mm. than him in terms of stats. Now, I'm not seeing both of them playing week in, week out in Eredivisie, so I can't Yeah. suggest that, comment on that. But if Eric Ten Hag's keen on Anthony, and I think at this point in time, it's desperation. We should have actually signed Anthony way back in, May, June. Do you think, Mm. Agrim bhai, when United discussed terms with Eric Ten Hag, and he must have definitely listed the player that he wanted back in Oh, April when they absolutely. signed. Absolutely. Like I was thinking, like hadn't this guy, what's his name, Gravenberg hadn't went to Bayern. I think he could have been Hmm. United best transfer for midfield. But I think like possibly like 2 years down the line, Gravenberg can get a call from Ten Hag again if he survives. That is again should be the priority for United. No, yeah, you're right. And I think it's not just Gravenbach. I think the Mazraoui player, the right back, United Yes. need a right back. So they Mm. might, Otherwise, because Bayern were smart enough to sign those players before the window began, and they got those that's players. But again, that's true. maybe Gravenbach's agent was Raiola, so that might have not been that easy. But again, that's thing. My point is that when Ten Hag had listed the player that he wanted, why didn't you Mm. act, fast? You should have been Absolutely. in talks and conversations with the agent back in the month of May. Yeah. We could have got Yeah. Anthony done by the time we started our season. Before that, 50, 60 million. But they waited. The fans turned on the owners, and when it went to a point that there was no coming back, and they knew now if they don't sign these players, they are screwed. They're screwed badly, and that's when they acted, and now they have gone in for Anthony. And from what I'm hearing is, even after signing Anthony, they would like to sign Cody Gakpo. So two forward is Hmm. what they need. Also, I'm hearing that that's because Ronaldo will leave towards the end of the window. So, which I'm not sure which club is in for him. Right now, only Atletico Madrid seems to be a viable option. No, But as coming I back think to, Marseille was also mentioned apparently. Marseille. yeah, I mean, Marseille, Dortmund was also mentioned. But do you think those clubs can afford the wages? No, I लगता है don't आपको think so. wages afford कर पाएंगे? No, मतलब it is like
asking something like what do you call a tough physics question to a 3 or 4 year old kid. No, it's like that. But anyway, let's go on. Yeah, bro, but correct. MCA says Alexander Arnold isn't doing good anymore. Uh, Brilliant right back, Alexander Arnold, fantastic player That's right. going That's right. forward. But defensively, उसके कुछ Hmm. shortcomings there, and there are some obstacles that Klopp has to face. Yeah. He, both he and Robertson, they get away because Liverpool play a high line. Most of the time, Yep. Liverpool have possession, they're attacking. Robertson, in fact, is better at defending compared to Alexander-Arnold. Yeah. But then, yes, Yep. Alexander-Arnold gets away because Hmm. Liverpool play a high line, they dominate That's possession, true. and the pressing overall other team is fantastic. But Yeah. I wouldn't say that Alexander Arnold is really poor at defending. He isn't the best of, what you call as a right back who can defend really well. He can do the Yeah. basic job, but what he can do is good at is going forward and putting those crosses. That's what his best Hmm. attribute is. Saw Van Dijk and Oasis meme. नहीं नहीं भाई नहीं देखा. अगर तूने टैग बहुत किया सही तो था. रुक चेक कर लेता हूँ. ओके तो क्या लगता है अगले मैं बिफोर आई मूव ऑन टू अदर ट्रांसफर्स क्या लगता है Yeah. यूनाइटेड दो फॉरवर्ड साइन करेगी या सिर्फ एंटनी साइन होगा? I mean, let's see, like we have to, I mean, understand, how the transfer is going to, I mean, is it like just like 20 or 30%? I don't, अगर 20, 30% पे बात चालू है तो I don't think it makes sense to me because you have हम्म to just get the players ASAP. जैसे कैसेमीरो को डील साइन किया था ना, within I think like 1 or 2 days. वैसे they have to do something like that. हम्म आई मीन इंस्टा पे भेजा बगलिन सर को. अच्छा, अरे हाँ, आई सीन दैट. मैं आपको भेजता हूँ एक सेकंड वो. So coming back एक सेकंड. to the two forwards, I think it's a very the Cody Gakpo one was a very easy deal to do. It's 38 million. हम्म. United just have to हम्म. wait for today's Champions League game to be over because they want him to feature in that game and then they will let him go. So if PSV get out of the Champions League, then it's going to be an easy deal. Pay off the हम्म. 35, 38 million they want, and That's true. practically they have agreed terms with the player and his agents. That's what I'm hearing and हम्म. reading all over social media. हम्म. And so that shouldn't be a difficult deal to do. I would keep an eye on Antony deal because I'm not sure how much United will go in for because if it's 90 for 100 million, I'm not sure if United will end up paying all that. I know that they are desperate, but doesn't make any sense. You would rather wait for another year and sign him for 50, 60 million. Because if he's Absolutely. too keen on working for Eric Ten Hag, I think he can definitely wait for another season. There's the World Cup around and he can develop more Hmm. in Ajax and we can Hmm. see how his consistency is. Because it's just 2 seasons. Prashant Bhai is still smoking Rutherford's tears. Yeah. So I think practical makes sense that अगर 60-70 million पे कर रहे हैं तो ठीक है यार, और 100 million Yeah. 90 million बहुत ज्यादा लग 100 रहा है यार, million is over too the much. Too much. too much. He's not I scoring. don't think it He's should. not like scoring like Hmm. 40, 50 goals a season, na? Makes no sense. Exactly. ठीक है भाई, तो मूव ऑन करते हैं फ्रॉम अपने Yeah. एंटनी भाई से और चेल्सी की बात करते हैं. एंथनी उनका भी है, बट एंथनी गॉर्डन is a player सस्ता that एंटनी Chelsea is है. strongly linked to. सब जगह Anthony. सस्ता है. He's one सस्ता player है who is strongly एंटनी. linked Hmm. strongly linked to Chelsea. I think 50 Yeah. million का bid reject किया है. I think they are going to Hmm. go about 60 to 70 million ऐसा लग रहा है. तो Yeah. क्या लगता है? I mean, Chelsea are looking ambitious, but then they're not able to close the deal, get the deals over line. Aubameyang Hmm. पेंडिंग है, फोफाना Yeah. पेंडिंग है, Hmm. और एक कोई पेंडिंग है, थी गॉर्डन है और एक सेंटर बैक भी पेंडिंग है, फोफाना सेंटर बैक. हाँ, ये तीन प्लेयर्स के डील काफी टाइम से लिंक्ड है एंड थोड़े थोड़े आई मीन मार्जिन. आई थॉट 45 मिलियन का जो बिड डाला था गॉर्डन के लिए वो थोड़ा कम था, तो 50 मिलियन में मुझे लगा एक्सेप्ट कर देंगे. बट अभी आई एम हियरिंग इज they are Chelsea want the entire sorry Everton want the entire package to be around
70 million इंक्लूडिंग एड ऑन। अच्छा प्लेयर है, यंग है, टैलेंटेड है, अच्छा प्रेसिंग प्लेयर है, अच्छी है, but yeah, बट you 70 cannot मिलियन just यार ask बहुत ज्यादा नहीं anything. लगता है? Exactly, that's what I'm saying. You cannot just ask anything what you feel like, ना मतलब कुछ भी मांग रहे हो अब तो, मतलब बच्चे के लिए 70 मिलियन मांग रहे हो, शेमफुल। मुझे अच्छा लगता है प्लेयर, आई मीन जैसे उसका हाँ, एटीट्यूड जो है, he used to be a ही very good रन्स player, अराउंड अ yeah. लॉट। और लिवरपूल के सामने also he gave a like a really good performance. हाँ तो बट ठीक है यार, इतना बट 70 मिलियन इज वे ओवर द ऑड्स Yeah, यार, मतलब इतना he's ज्यादा only नहीं पे। 20. कितना? How old is he? बहुत Anthony छोटा है, Gordon. बहुत 20 कुछ है। He 20 for and asking 17 million. Are you crazy? हाँ भाई, क्या ही कर सकते हैं अभी। Hmm. ऊपर से ब्रिटिश प्लेयर है, तो ऑफ कोर्स तुमको तो Yeah, मालूम so है tax, ब्रिटिश टैक्स लगते yes, British tax तो आएगा. That's true. हैं। तो वही इशू है, एंड आई थिंक आई नॉट श्योर वेदर चेल्सी विल एंड अप पेइंग दैट ह्यूज अमाउंट, बट we'll wait and see. पे कर Now, सकता है, while we पे talk कर about सकता है, पे कर सकता कर है. You know why? कर Because सकते हैं, बट they actually, you know why? The reason is like I think they're quite desperate to get their forwards by this window, because like they just lost 3-0 against Leeds. So I think it's a big task for them to get like a proper forward and be like good for at least like 38, or probably for this coming season, in my opinion. करेक्ट, आई मीन फॉरवर्ड तो मिसिंग था, आई मीन लीड्स के सामने दिख ही गया। That's good. They were meeting them missing that Hmm. firepower. I'm not sure how Aubameyang is going to make them world class. Fantastic player. Again, 33 Yep. years of age. Not the signing Chelsea Hmm. should be making. But I think they are short of options right now at this stage. Yeah. And desperate times call for desperate measures. We all know what's Yep. going on in Yep. United. Same Chelsea जैसे Chelsea का ही है। Yes. प्रशांत दुए की तरह उड़ तो नहीं गया अभिषेक, नहीं नहीं नहीं, he's coming. He's running a bit late, so he's just joining in some time. एमशे CR7 को दया दांडिया डेविल्स, हियर वी गो कंफर्म मैन यूनाइटेड टू ऑफ फॉर स्ट्रेट स्वैप विद नट्टू काका। अरे भाई नट्टू काका तो हेवन में पधारे हाँ, यार। हाँ, हेवन में पधारे हैं. Venkatesh says, how are you guys doing? Welcome Venkatesh to the stream after a long time. Bhai, good We're to doing see you. good, Good to see very you. good, Venkatesh. तो coming back to Chelsea, Anthony का मुझे कुछ stats दिखाने हैं. So while we speak Hmm. about him, Yes. so let's judge him by Anthony the Gordon, stats. right? Anthony Anthony Gordon, Gordon, right? yes, correct. Not Yes. Okay. Anthony, Anthony Gordon. Yeah. There are too many Antonys, Let including me, Martial also. yeah. Okay, So this is sprint for courtesy of 90s. Sky Sports. Sprint Mm-hmm. 20.6, ranked first. Crosses attempted second, 119. Shots on Okay. target 18, second. Mm-hmm. Duels won 173. Fouls 164. This is 2001, 21, 2022, मतलब लास्ट सीजन का एवर्टन का Last रैंकिंग season. है। तो दिस Hmm. इज नॉट द रैंक जो है वो पूरे प्रीमियर लीग का नहीं है, वो एवर्टन का है। Hmm. ठीक है। हाँ. तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप बोलो तो ये है, कोई लोग किसको लगे पूरा प्रीमियर लीग का नहीं, एवर्टन का है। बट अगेन इट्स Yeah. स्टिल अ वेरी गुड stats that compared to other players, and Mm-hmm. if he's from Yeah. what we can see बहुत ही हार्ड वर्किंग प्लेयर है, will Hmm. suit Thomas Tuchel's requirement because pro German manager है, Okay. he wants his players to Yep. run, to sprint, to work hard, Yep. Klopp Okay. or Ralf Rangnick की तरह, so he's that kind of a manager, so absolutely suits his profile, and that's exactly the reason why Chelsea want him. So I think 50 Yeah. million is good, but 70 million again over the odds there, and I think at the end Chelsea will end up paying that money because अभी desperate है वो, उनको forward की Yeah. जरूरत है, and it will That's happen. true. When MJ says Varane masterclass, Lisandro Martinez masterclass, Van Dijk embarrassed, Koulibaly eating 3 goals and a red card. It is really lonely at the top. Yeah, I mean, बहुत ही weird week था. Nobody expected Yeah. the results. Yeah. City Newcastle, and then Hmm. Chelsea का जो Leeds के सामने हुआ, and then Yep. Yep. United, surprised everyone by the performance. So typical Premier League था, unexpected Yes. results आए, and Yes. Yes. वैन डाइक के बारे में तो बात नहीं करूंगा। I mean, this season he is बिल्डिंग थोड़ा ऑर्डिनरी लग रहा है,
बट कुलिबाली के बारे Hmm. में जरूर बोलूंगा. ठीक है, बैड गेम था, बट आई थिंक इज अ ब्रिलियंट डिफेंडर. One of Yes. my favorites. When United bought Maguire, I thought we should have bought him. मैं तभी बहुत बोल रहा था सोशल मीडिया पे, कुलिबाली कुलिबाली कुलिबाली, बिकॉज फैंटास्टिक प्लेयर है. ही वाज अवेलेबल फॉर Hmm. 90 100 मिलियन. अगर तुम 85 मिलियन मैगवायर के लिए दे रहे हो, तो तुम कुलिबाली के लिए 100 मिलियन दे I ही don't सकते know हो. just pay बहुत ही pay that फैंटास्टिक much of प्लेयर है amount वो. of money. Exactly. तो अच्छा प्लेयर था, बट लेट्स सी. Hmm. अभी आई थिंक ही विल डू वेल इन अपकमिंग डे. बहुत अच्छा डिफेंडर है. हेड्स, Should be. बहुत ही काम हेड के साथ खेलता है वो. He knows what he's doing, Hmm. leads the back line, and so I don't think one bad performance will affect that. AB Hmm. says, Abhishek Putran says, DV be true when you say this. कितनी बार मैन यूनाइटेड बस लिवरपूल का हाईलाइट देखा. भाई बहुत बार भाई. वो रैशफोर्ड का गोल तो मैंने, स्पेशली वो सैंचो का गोल, तो वैन डाइक को और जेम्स मिलर को उल्लू बनाया उसने. कितनी बार Hmm. देखा मैंने. Yeah. अच्छा लगा, दिल को That's true. ठंडक पहुंची. आई हैव बीन सीइंग इट. आज भी बहुत दिनों के बाद इतनी खुशी, एब्सोल्युटली इतनी खुशी बहुत दिनों के बाद मिली है. आई वाज, हम लोग लाइव कर रहे थे हमसे, अग्रिम भाई, आपको बिलीव हो रहा था Hmm. यूनाइटेड ऐसे ऐसे खेल रही है, इतने टैकल डाल रही है, मैं डुअल विन रही yeah, है. I was not हमको expecting किसी that. को भी बिलीव नहीं हो रहा था. नहीं मैं बोलूँ एक I just want to mention one point. Like I think हम्म, if that match would have turned in Liverpool's favor, it could have been हम्म, upside down for for the players and for the fans as well. हम्म. करेक्ट करेक्ट, That's what I एब्सोल्युटली. think. Yes. बट देन, hats off to The the good. guys. As Yes. a team, they played together, and what I liked about the defending is, you could see Lisandro Martinez, Varane communicating with each other. They Yep. talking to each other, and you know the back four was so fantastic. The three players who replaced Varane, Martinez, and Malacia. Looking at them, even Diego Dallo got, बहुत ही जोश में आ गया था. उसकी भी क्या फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी. तो That's true. ओवरऑल द बैक फोर वाज फैंटास्टिक, और ये कंटिन्यू करना पड़ेगा यूनाइटेड को. ऐसा नहीं कि लिवरपूल का गेम है तो जीत गए, तो अभी 3 पॉइंट्स मिल गए तो साउथहैम्पटन इज नो पुश ओवर. दे आर गोइंग टू रन अराउंड. एंड Yep. उन साउथहैम्पटन की टीम एक ऐसी टीम है जो बहुत ही हार्ड वर्क करती है. हाउ द वे दे प्रेस. तो डिफिकल्ट Hmm. फिक्चर होगा, गो टू सेंट मेरीज एंड विन अगेंस्ट साउथहैम्पटन. बट आई थिंक इट्स पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड. तो वापस Yes. ट्रांसफर में आते हैं यूनाइटेड से. अलेक्जेंडर आइजैक टू न्यूकासल. क्या बोलते Yep. हैं हमशे भाई? आप ला लीगा ज्यादा देखते हो मुझसे. क्या बोल सकते हो अलेक्जेंडर आइजैक के बारे में? हाउ इजी एज अ प्लेयर? I'm sure. Can you answer? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ अग्रिम भाई. अच्छा मेरे को पूछ रहे हैं. So हाँ. I think you were you like informed about this news? Like like Devas has put too many restrictions on La Liga clubs apparently करेक्ट करेक्ट, आई नो आई because नो. so उसी चक्कर में क्या है ना like all these clubs including Valencia and Real Sociedad they have to sell their players out because of this. Because यार अभी तो 4-1 के मैच में खेल के गया है यार वो बंदा क्या नाम है Alexander Isak and he हाँ, scored the goal also in that बारसा के सामने. करेक्ट. and you and you have to like basically sell your best player out to Newcastle. I mean to the Premier League. Imagine पैसा the state पैसा of पैसा. La तो Liga. हैव टू. Imagine the state of या आई imagine थिंक the state of La हाँ. Liga. Na? That is the करेक्ट main करेक्ट. issue. But I think it's a very interesting signing for Newcastle as well. They need a proper number 9, and I think he plays well, though, in my opinion. Even for like Sweden, he is a very good striker. Chelsea got their pants pulled down and were asked to bend down. Abhishek says all were pumped up, not even a single, sorry, even a single tackle. The fans were backing players. Players themselves were motivating each other. After ages, could see the fire. Absolutely, क्या fire था. That's true. Crowd was with them. The players backing each other. मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी हुई लिसांड्रो मार्टिनेज. क्या बंदा यार, क्या मतलब, Yes, butcher of Amsterdam absolutely. Yes. Yeah, becomes आराम से pitbull of Manchester. yes. आराम से he was like एक मतलब like line breaking passes he was stopping very well when he was like हम्म. stopping करेक्ट. Firmino or probably Salah also in that manner. हम्म. और भाई क्या है, ये 5'9" हाइट है,
कुछ नहीं कर पाएगा भाई मेरे को लगता है उसने जेमी कैरेगर का इंटरव्यू सुना है जो जिस तरह से जेमी कैरेगर को क्रिटिसाइज किया वो इंटरव्यू देख के मतलब मुझे लगता है एरिक टेनाग ने ना मैच के पहले उसको जेमी कैरेगर का इंटरव्यू दिखा जब जहाँ पे वो बोल रहा है Yeah. कि ही नॉट गोइंग टू वर्क एब्सोल्युटली Yeah. वेस्ट प्लेस 5'9" डिफेंडर इज नेवर गोइंग टू वर्क आउट तो मतलब उसने वो जोश में आया और दैट टू अगेंस्ट लिवरपूल Yeah. फैंटास्टिक ब्रिलियंट ब्रिलियंट मुझे तो और अभी भी अर्जेंटीनियन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि अर्जेंटीनियन मैं हाँ हम्म, कंटिन्यू करो फिर मैं क्या बोलता हूँ. नहीं मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि एक्चुअली नेट इतना अच्छा खेल रही है इतना एफर्ट डाल रही है Yeah. That's true. बट मेरे को लगता है उससे ज्यादा ना लाइक अर्जेंटीनियंस आर लाइक हॉट ब्लडेड लाइक पीपल like they cannot take any sort of criticism. They'll show it on the pitch. That is one good thing about करेक्ट Argentinian. एमसीएस इज अबव एवरेज अलेक्जेंडर आइजक के बारे में बोल रहे हैं अबव एवरेज was Yeah. linked to Arsenal last year Arsenal, a yes. good That's addition true. but not extraordinary but would improve Newcastle Abhishek Absolutely. says he could see Carragher का face in every Liverpool play ना आई मीन अलेक्जेंडर आइजक मुझे थोड़ा रैशफोर्ड टाइप प्लेयर लगता है यू नो मोर ऑफ Hmm. पेस ज्यादा है उसकी बट एक रैशफोर्ड का फिनिशिंग बहुत फैंटास्टिक है इसका फिनिशिंग इज नॉट गुड आई थिंक यू लुक एट द स्टैट्स द नंबर ऑफ गोल्स इज कन्वर्टेड गोल्स पर गेम वो इतना अच्छा नहीं है तो ड्रिबलिंग That's, अच्छी है उसकी इज वेरी फास्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर इन ला लीगा और hmm. हाँ ओवरऑल गेम प्ले अच्छा है बट ये लाइक एमसी सेड above average है and I think 65 million is a lot for Alvin Isaac. At most 50 million, Hmm. 65 million बहुत ज्यादा है क्या Hmm. आप Okay. देखते हो ला लीगा लगता है आपको 65 मिलियन Yes. प्लेयर है वो मतलब I mean, if I was Barcelona and if I wanted to buy Alexander Isak, I would have actually paid him like maybe somewhere close to like 45 to 50 million. इतना ही बढ़ता maybe. Winston is here. He और says Antony pales in comparison to some of the best attacking midfielders like Scholes. He's just only about flair and being bit of a daredevil. That's all. 40 million at the most. Yeah, like I said, 50 million hmm. I think is max for Antony. Dribbling Yeah. is good. Ball control is fantastic. Can cross the ball. Yeah. Inverted winger Yeah. who plays on Yeah. the right hand side, left footed. But at times he's a bit rash as well. Hmm. Makes a lot of mistakes. Of course, young at 21 years only. But I feel 95 million is too much, too much, too much, too much. And Yeah. not sure now. I think now that United are fully pledged and fully focused on him, even Antony is demanded to leave. So I think it will happen, and United will end Yeah. up paying over the odds, which I don't want to happen. But I think again, it's desperate times and only a week to go, and now board has to back Eric Ten Hag to prove that they are competitive, which is not correct. We all know what is the Yeah. case, and no matter even if they end up bringing Messi, Neymar, we are Mbappe, we still want the Glazers out because it is now 17, 18 years, and what they've done in these 17, 18 years is unforgettable, unforgivable. So there's no going Yeah. back from that. They can sign for all the best players in the world, but we want them out. MCA says Varane RKO to Diaz was the dream level game changing moment. Fantastic. अरे क्या मतलब लिटरली वेंट मुझे लगा उठा के तो फेंक देगा Hmm. but again, Varane was like leader. वो Yeah. बैकफोर का लीडर था वरान एंड what advantage I'm not sure how correct I am but I feel that Varane can speak Spanish La Liga से आया है Martinez is Argentine so Spanish again David De Gea is Spanish. Spanish Yeah. that Yeah. so that communication between these three works actually well More they solid. Yeah. and literally you could see both these defenders talking to each other helping out each other and that's what helped United to defend together in numbers and that's what impressed me a lot and I think Harry Maguire and Luke Shaw will have to work their ass out now to get in the squad because I don't think at least for the next 2 3 games they're going to get a chance these two Hmm. along with Malaysia have fixed their place and I Yeah. think Dalot, of course, uski jagah fixed ही है because Van Bissaka is not in his plans.
But again, yes, fantastic. I'm sure that Bruno not giving the ball to Salah reminded me of Vijay Mallya, SBI. नाइस रेफरेंस, अच्छा रेफरेंस है, विजय माल्या एंड एसबीआई. बट यार मुझे तो डर लग रहा था भाई, वो क्या कर रहा था, मुझे लगा रेड कार्ड खा जाएगा ये, ऑलरेडी येलो पे था We were वो. discussing that day. Yeah. नहीं करना चाहिए था. पर ठीक है. नहीं, मुझे but लगा भाई that कार्ड वार्ड Lisandro मिल Martinez, जाएगा, गेम हो जाएगा. वो Lisandro Martinez का like goal line save भी was also great ना. That हाँ, मुझे लगा ब्रूनो फिनिश कर रहा है, 2 मिनट के लिए भूल गया यार मैं डिफेंड कर रहा हूँ या अटैक कर रहा हूँ. exactly. बट अगेन ठीक है, अच्छा. ब्रूनो का भी ओवरऑल गेम इतना ठीक था, पर उसका जो कमिटमेंट Yeah, लेवल, एनर्जी लेवल जो टीम के साथ था, that's true. वो ब्रिलियंट था. एंड यू नो दैट एलांगा का मिस जो था, दैट वाज आल्सो क्रिएटेड बाय ब्रूनो. ब्रूनो ने उसको छोड़ा था. तो अगेन Mm. लेड फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन, एंड आई थिंक he has to be little more disciplined in terms of his passing. Yes. He can be back to what he was, scoring those goals and assisting goals. That's what his specialization is. तो हम ट्रांसफर के बोल के घूम फिर के वापस वही मंडे गेम में आ जाते हैं. अभी तक वो गेम के नशे से हम बाहर नहीं आए अभी I know. That was a very good game. तक. अलेक्जेंडर आइजैक से मूव करते हैं. एक इंटरेस्टिंग लोन आर्सेनल का प्लेयर निकोलस पेपे गोइंग टू नीस, 72 million pounds, a total flop. क्या लगता है आपको, will he come go to Nice and come back to Arsenal and make a difference, or I think you think कि Pepe का time at Arsenal is over? मेरे को लग रहा है it's somewhat over, because now they have like Jesus and this guy, ना, what's his name? Who's that other forward? I think they have Odegaard and Martinelli, yeah, Martinelli है, Martinelli. Saka है, But and they want Pepe another plays forward. as like an attacking midfielder and a winger, no? So I think his chances are very less. Very less, very less. Correct, correct. And they are looking to buy Pedro Neto, And there's 50 Saka million from also. Wolves. I just forgot that Arsenal has Saka also. Shaka is more of a, oh, yeah, Bukayo Saka, if you're talking about, yeah, he's a right Yeah, winger, and that's where actually yeah. Pepe plays. And they're looking to sign Pedro Neto as well. तो पेड्रो नेटो भी Petro साइन करने वाले हो Neto, लोग. Petro Neto का वुल्स है का कौन से? वुल्स Wolves वुल्स का का है. है. Oh yeah, मस्त yeah, प्लेयर है, yeah, I बहुत ही remember. बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही Hmm. बढ़िया प्लेयर है. Yeah. थोड़ा इंजरी No, है उसको, इंजरी इश्यूज है, I'm बट I'm surprised nobody's buying Trossard. Nobody's buying Trossard. प्रसाद ना अच्छा है. बहुत अंडररेटेड. Bowling और ना. वो वेस्ट हैम का एक विंगर है ना, वो राइट में खेल सकता है, क्या नाम है उसका, वो भी Yeah. बहुत अंडररेटेड है. आई फॉरगॉट हिज What नेम. is the name? लिस्ट ऑफ I क्लॉप will check it. एक्सक्यूजेस: हैवी विंड, सन, ड्राई पिच, क्लॉक. अभी क्या बोला था उसने कि हाँ, टाइम 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 वाज नॉट ऑन आवर साइड. अरे भाई, 90 मिनट गेम होता है, हर गेम 90 मिनट का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है. हम्म. क्रेसवेल बोल रहा है क्या? बट हाँ, क्या बोल रहा है? क्रेसवेल बोल रहा है या शिफाल बोल रहा है? नहीं, वेस्ट हैम का. क्रेसवेल इज विंग बैक. क्रेसवेल तो उनका विंग बैक तो है. कौन से पोजीशन पे जैरेड बोन, है? जैरेड बोन, जैरेड बोन, गैरेथ गैरेथ बॉन, जैरेड हाँ. बोन, जैरेड बोन. बहुत गैरेथ अंडररेटेड है. बॉन, हाँ. बहुत ही सही प्लेयर है एकदम. That's true. ट्रेडिशनल विंगर बोलते हैं ना, जो ड्रिबल भी करता है, क्रॉस भी डालता है, वैसा है. आजकल के हम्म. विंगर क्या अंदर कट करके शूट मारना प्रेफर करते हैं, इन्वर्टेड विंगर ज्यादा होते हैं. बट ये एकदम ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल स्टाइल विंगर है, और बहुत ही हार्ड वर्किंग प्लेयर है. Yeah, that's true. Klopp at Dortmund fell apart after 7 years. Klopp at Liverpool falling apart after 7 years. Nah. Only we could find a reason for this weird correlation. There's a very weird fan. There's a very weird fan movement. You're just putting like everything. मतलब अगर 7 साल बाद ये हो गया तो मतलब it has to Hmm. happen after like 10 years. ये कुछ भी लॉजिक है भाई. And नहीं होगा, नहीं होगा. I think Klopp अच्छा मैनेजर है. And yeah, he's been backed what by. I feel is, Yeah. एक एक मिडफील्डर शॉट है वो लोग. वन गुड Yeah, मिडफील्डर that's शॉट है, बिकॉज और क्योंकि कीटा और चैम्बरलेन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं. इंजरीज yeah. उनकी कितनी होती है. एंड कीटा थोड़ा रैश भी है, कभी कभी खेलता है तो बहुत ही अच्छा खेलता है, वरना वो Yeah. खुश होता है. ऑक्सलेट चैम्बरलेन तो आधा टाइम इंजर्ड रहता है. एंड थियागो जो उनका मिडफील्ड को होल्ड करता है, ही इज इंजर्ड नाउ. तो और एक Yeah. महीना बाहर है वो. तो दे आर रिलाइंग ऑन हेंडरसन
Milner, who I think is now 50 or 60. Milner and Fabinho. Fabinho is one player, but Fabinho भी थोड़ा भी 30s के क्लोज है. तो अगेन वो थोड़ी एनर्जी नहीं है, थोड़ा बोलते हैं ना ऐसा प्लेयर नहीं है जो रन करके शो को. थियागो है, बट अगेन ही साइडलाइन विद एन इंजरी. So I think they are short of one midfielder. So if they can buy a midfielder, a decent one, someone like Yuri Tillemans है. I am not sure why Hmm. nobody is buying Yuri Tillman. 1 year left on his contract. I think Leicester will sell him for 25-30 million. Because if they don't sell him now, they could lose him for free next year. So Yuri Yeah. Tillemans is a fantastic option Liverpool के लिए. And he's Hmm. more of a player, number 8 box to box player है, who likes to create. Hmm. क्योंकि उनको डिफेंसिवली रखना तो ऑलरेडी Fabinho, Henderson और मिलनर है. Someone who Yeah. can link the attacking three and those three defensive midfielders. Yeah. Tielemans is a right signing. I'm not sure whether how much he's a flop player or will Liverpool go for him, but I'm very Hmm. surprised that no one is in market for him. But Arsenal are that is linked to why, him. yeah. Hmm. But I think Liverpool पता है क्या करेगा? They will wait for a year and go for Jude Bellingham. तो Hmm. वही करेंगे. But I think They ये they probably. वन ईयर में Hmm. बहुत इशू, अगर लिवरपूल ने अच्छा नहीं खेला ना तो इशू हो Hmm. जाएगा, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ऊपर आ रही है. यू लुक एट Yeah. स्पर्स है, आर्सेनल की तो बात मत करो, मतलब फुल धुआंधार फॉर्म में है. Hmm. Can't it's becoming very unpredictable. And Newcastle again, another team who is doing brilliantly. And बहुत unpredictable हो गया है लीग. I think Liverpool will have to act. 8 days in the Yeah. window. Midfielder तो चाहिए भाई. FSG has to get proper Hmm. midfielder. नहीं तो Yeah. बहुत ही पंगे हो जाएंगे, बड़े पंगे हो जाएंगे, Hmm. क्योंकि उनकी Yeah. Yeah. इंजरी लिस्ट पता है उनको. 1-2 सीजन पहले क्या हुआ था, दे डिडंट बाय सेंटर बैक्स, That's और true. उनकी पूरी सीजन की Bench लग गई strength थी. नहीं है. पूरी सीजन की Bench strength नहीं बहुत है. धक्के Bench मुक्के strength का मार ही के, problem है. धक्के मार Yeah. करके फोर्थ पोजीशन पे आए थे वो लोग. वरना मुझे तो लगा था Hmm. चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे. बट ठीक है, आई थिंक दे विल लर्न, दे शुड लर्न लेसन फ्रॉम दैट एंड गेट अ मिडफील्डर. Yes. और Yes. भाई ट्रांसफर की तो बात बहुत कर ली. तो क्या लग ये मुझे आप एक बात बताओ, ये Hmm. वीकेंड तक कुंडे को रजिस्टर कर पाएंगे लोग? ये कोंटे को आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस गाइस डील ना. ओबामयांग. ओबामयांग क्या बोल रहे हम्म. भी लाइक इट्स फिक्स. आई डोंट नो कब तक निकालेंगे उसको. लाइक नाउ चेल्सी आर अनविलिंग टू पे लाइक इवन 15 मिलियन पाउंड. आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कर रहा है वो लोग. But today he played बट one game by the way against Man City. सिटी, But that is सिटी, हाँ हाँ वो हाँ. unregistered है ना, तो उसका कोई इशू नहीं है. So he can have his what do you call game time. बट आई थिंक बट आई थिंक बारसा डोंट वांट 15 million, they want 25 million, right? मतलब 15 million euros which approximately goes up to like 25 million pounds ना वैसा. 25 to 30 million नहीं, pounds. हाँ, बट डोंट यू थिंक 33 ईयर के लिए ज्यादा है? ठीक है यार, पैसा तो मिल रहा है ना. Should be grateful for that. ठीक है, अच्छा 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 प्लेयर, प्लेयर तो अच्छा है ही, Obviously. मतलब. बट थोड़ा मूडी Absolutely. प्लेयर है, थोड़ा मूडी प्लेयर है. Hmm. वो आर्सेनल में देखा Hmm. हमने क्या हुआ था एंड ऑफ द डे. बट ठीक है, ये Hmm. थॉमस ट्यूकल का प्लेयर है, तो थॉमस ट्यूकल knows how to handle him and he specifically wants him. So I think that Yeah. shouldn't be a problem in terms of attitude at uh, Chelsea. But I think Chelsea have very short time, 8 days to go, Hmm. three players to sign: Fofana, Aubameyang, and Gordon. I'm not sure whether they'll Yes. how many deals they'll able to get over the line. और Yes. इससे पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूं, एक क्विक अपडेट पूछना चाहता हूं. अब मैंने सुना आज लॉरी लिटवेल, who is again a very reliable source when it comes to United, फ्रैंकी डियोंग टू यूनाइटेड is off now. तो क्या लगता है अभी फ्रैंकी डियोंग स्टे करेगा बारसा के? अभी भी United चांस still है? wants to. United still wants. मैंने एक कोई रिपोर्ट पढ़ा था. They said like like United is probably giving one more try to get Frankie De Jong to Old Trafford. Let's see. We नहीं, have to आज ही अभी witness it someday. थोड़ी देर पहले ही मैंने नया पढ़ा. Hmm. एथलेटिक जो बहुत ही रिलायबल है, मतलब when it comes to प्रीमियर लीग एंड एवरीथिंग, एथलेटिक बहुत ही Yeah. फैंटास्टिक सोर्स है. तो Yes. तो वो बोल रहे हैं कि now United have given up on the chase to Frankie de Jong. Looks like it's not going to Hmm. happen. तो देखते हैं. एमशे says where will be Barca versus Barca B? I think he's I asking don't know. कौन से चैनल पे होगा, Oh, Man City. टेलीकास्ट होगा क्या? Okay. नहीं, I don't think हम्म. so. वो बारसा कौन बी सा बोल रहा टीम है मैन करेगा? सिटी को. हाँ, कब बारसा का टीम है टीवी ना इसलिए. करेगा. हम्म. Hmm.
तो क्या बोल क्या रहे हो? आदमी है भाई, मतलब क्या आदमी है हमसे। बारसा को, क्या बारसा की टीम को बारसा भी बोल रहे हैं और बारसा की टीम को बोल रहे हैं मैन सिटी। मैन सिटी क्या का है? बोल रहे हैं? डू यू थिंक बारसा विल गो फॉर नेक्स्ट मेसी नेक्स्ट सीजन? आप अग्री? माय Who क्वेश्चन knows? आपके लिए। Who knows? It's all up to Messi. आई थिंक मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। और भाई ये लोग पीएसजी वाले एम्बापे को भगवान बना के बैठे हैं। तो आई थिंक Good बारसा luck for वर्सेस him. बारसा इंग्लैंड कैंपस। बारसा वर्सेस बारसा इंग्लैंड कैंपस। अच्छा अच्छा है भाई, अच्छा है। हाँ तो कमिंग बैक टू रजिस्ट्रेशन, आई फील दैट समहाउ दे विल गेट रजिस्टर। वो खोज कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो जोल जपाटा करते ही है एंड में। लास्ट सीजन भी ऐसा ही हुआ था, अग्वायरो को रजिस्टर नहीं किया था और दो दो प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं किए थे। फिर भी कुछ भी एंड में जोल जपाटा करके उनको बनाए रजिस्टर कर ही दिया। तो ऐसा लगता है ओबामयांग को बेच देंगे, सर्जिनो 10 को बेच देंगे शायद से, और रजिस्टर हो जाएगा कुंडे। बट हम्म, इंटरेस्टिंग टू सी ये बर्नार्डो सिल्वा आता है कि नहीं। आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा का डील बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, 8 डेज टू गो। क्योंकि मैन सिटी को भी रिप्लेसमेंट साइन करना होगा ना, अगर अगर बेच रहे हैं तो। मैन सिटी अभी उनको, दे वर लुकिंग टू साइन लुकास पैक्वेता। और लुकास पैक्वेता तो आर्सेनल जा रहा है, सॉरी वेस्ट हैम जा रहा है, नॉट आर्सेनल, वेस्ट हैम जा रहा है। वेस्ट हैम का डील बहुत क्लोज है लुकास पैक्वेता के लिए। लोग इसका बेटा कुछ भी अजीब साइनिंग है। बाय द आई वे। मीन वेस्ट हैम के लिए ठीक है, ठीक है, मतलब इफ ही वांट्स टू प्ले इन द यूरोपा लीग, दैट्स अप टू हिम एंड ऑफ द डे। हाँ भाई, सही बात, सही बोल रहे हो। बाय द वे, ये क्या कुछ तो पूछा था आपको ट्रांसफर के बारे में। ये देखो, चलो भूल गया मैं, याद आता तो पूछता हूँ मैं। तो इन द मीनवाइल मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, चैंपियंस लीग ड्रॉ। यस। एमशे भाई, अग्रिम भाई, आप दोनों कुछ बोलना चाहोगे? देयर यस, क्रिस से चलता देयर विल बी नो बारसा नेक्स्ट सीजन। ओ माय भाई गॉड, ये क्यों? रियल फैन लगता है। नो, ही लुक्स लाइक अ क्यों रियल भाई? फैन। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, चैंपियंस लीग ड्रॉ, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू फर्स्ट, अग्रिम भाई। This will be very interesting, you know. I am expecting, you know, I mean, if you really ask me, I mean, I do not want Bayern, but somehow I feel we'll get Bayern again. And उसके साथ चेल्सी फ्री। चेल्सी, बायर्न, बहुत ही हम्म, टफ ड्रॉ हो जाएगा, लास्ट ईयर की तरह हो यस, जाएगा फिर। एग्जैक्टली। और आई डोंट थिंक दैट शुड बी, बारसा को लास्ट ईयर की कंपैरिजन इस साल इजी ड्रॉ डिजर्व करता है। तो बारसा इज करंटली इन पॉट टू, तो पॉट टू में है बारसा। तो दे कैन गेट मैन सिटी, दे कैन गेट एसी मिलान, बायर्न, पीएसजी, पोर्टो आयैक्स भी है बट मैं उनको गिनती में नहीं लेता, इंटर मिलान, डॉर्टमंड, नापोली। हाँ, ये इन क्लब में से कोई भी मिलेगा। दे विल अवॉइड लिवरपूल, दे विल अवॉइड चेल्सी, भी नहीं आएगा सेम पॉट में। दे विल अवॉइड इंटर भी यूवेंटस, नहीं आएगा ना? ऑफ कोर्स। इंटर भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, इंटर क्या, हम्म, इंटर पॉट 3 में इंटर आएगा, इंटर पॉट 3 इंटर में। का पोजीशन क्या था? इंटर का पोजीशन सेकंड था ना? हाउ विल नहीं, बी इंटर एबल टू? वो अलग, पॉट सिस्टम अलग होता है। तो ये पॉट अच्छा, वन में है, मैं बता देता हूँ आपको। पॉट वन में है रियल, आइटन ट्रैक, फ्रैंकफर्ट, मैन सिटी, हम्म, मिलान, बायर्न, हम्म, पीएसजी, पोर्टो, आयैक्स। और पॉट टू में है लिवरपूल, हम्म, चेल्सी, बारसा, यूवेंटस, एटलेटिको, सेविला, लाइप्जिग, टॉटनहम हॉटस्पर। तो ये या दोनों या पॉट है। तो पॉट 3 और पॉट 4 भी है, बट मेजर टीम, हम्म, अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीम इसमें ही है। तो हम्म, ऑफ कोर्स तो लिवरपूल बच गया, चेल्सी बच गए, यूवेंटस बच गया, एंड स्पर्स बच गए। तो ये हम्म, टीम थी जो बारसा अवॉइड कर सकती है। आई हम्म, वांट आयैक्स, लिवरपूल, बारसा, यूवेंटस ग्रुप ऑफ डेथ। भाई लिवरपूल और द यूवेंटस नहीं आ सकती बारसा के ग्रुप में। इट विल बी हम्म, स्कैरी बट नॉट फॉर अस। हाँ, बड़ा ही या कॉन्फिडेंट है भाई तुझे जावी पे, जावी पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। पहले ग्रुप बट स्टेज यस तो आई क्लियर थिंक करते हैं भाई। विद, हाँ, बट इतने प्लेयर्स हाँ, साइन कर लिए हैं, तो अभी दे हैव टू मेक अ एग्जैक्टली। डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो भाई
एटलीस्ट That's सेमीफाइनल तक true. तो जाना ही है, और मिनिमम है ला लीगा जीतना। ला अरे लीगा दे क्वार्टर हैव पहले टू पहुंच विन जाए, सम और मैं द बोल रहा हूँ अदर। ना, क्वार्टर पहले पहुंच जाएंगे ना, दैट शुड बी द मेन फोकस। सेमीफाइनल तो बात की बात है भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एंड Because आई this is कंप्लीटली। actually an inexperience. Because this is a very inexperienced squad, if you ask me. Because all of the players are very young and they are unable to understand how high intensity European football is. Like when you play European games, na, it is very high intensive game. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। By the way, Absolutely. just an update, Juventus for Depay, they're completely off now. They are not going in for Depay. Milik is the striker that looks like more of a possibility. So that is progressing, and that looks like it will happen. Depay की salary demands बहुत ज़्यादा है. So I think Juventus are not willing to meet that demand. Hmm. And also another update, United has made an official offer to another goalkeeper other than Kevin Trapp in the last few hours. Kevin Trapp was linked to United, but I think 25 million का price सुन के United थोड़ा they put themselves behind, and they're looking to sign another goalkeeper. Goalkeeper sign होगा, definitely है तो वो। Coming back to the Champions League draw, तो Mm-hmm. कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। जावी से ज्यादा लेवेंडोव्स्की पे भरोसा है। अच्छा अच्छा। यूएफा विल स्कैम पीएसजी एंड बारसा। दैट्स इट, मैन यूनाइटेड गो ऑन फॉर डीपे। भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए डीपे भाई, मुझे नहीं चाहिए ही नहीं डीपे। अच्छा प्लेयर है, बट आई डोंट वांट इट। आई थिंक आई वुड रादर गो फॉर कोडी गैक्पो, हु इज यंग and who is hungry and he will have something to prove. So that is the That's player true. that I will go in for compared to Depay. So coming back to the Champions League draw, so yes, बारसा और पीएसजी रहेगा तो एक ग्रुप में मजा आ जाएगा। मेसी अगेंस्ट बारसा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा देखने को, बट देखते। Hmm. आई ऑल्स ये भी हो सकता है ग्रुप, आई ग्रुप ऑफ डेथ बनाना है ना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, इंटर मिलान एंड मे बी अदर टीम्स लाइक सेल्टिक, मार्से, क्लब ब्रूज उसमें से। Yeah. बट रियल, लिवरपूल, मिलान क्या इंटर मिलान क्या फैंटास्टिक ग्रुप होगा, अब मजा आ Yeah. जाएगा। Hmm. या फिर इंटर या इंटर फिर मैन इंटर का क्या बदनसीबी रहेगा ना, लाइक फॉर द लास्ट थ्री सीजन, इंटर का क्या। मतलब इससे इंटर का क्या बदनसीबी है ना, लाइक फॉर द लास्ट टू सीजन दे आर मीटिंग रियल एंड दे आर गेटिंग नॉकड आउट बाय रियल एवरी टाइम, एंड दिस विल बी द थर्ड टाइम दे आर बी मीटिंग बाय मैन सिटी। If they meet the third time, correct. And we Yeah, could yeah. also check the possibility मैन सिटी, बार्सिलोना, डॉर्टमंड, ये तीन भी एक ग्रुप Yeah. में आ सकते हैं। मैन सिटी, Hmm. बार्सा, डॉर्टमंड, तो बहुत ही जबरदस्त होगा। और एक पॉसिबिलिटी मुझे अच्छी लग रही है, बायर्न। Hmm. हाँ बोलना, क्या बोल रहे हो। मैं बोल रहा था कि मैं पर्सनली मेरे को क्या लग रहा था, बायर मिलेगा मेरे को लग रहा है। से एनीथिंग नहीं हो, बट आई थिंक मेरे को लग रहा है लेवेंडोव्स्की दिस, वर्सेस बायर्न। या बार्सिलोना, बायर्न, यूवेंटस। नहीं नहीं, यूवेंटस और बार्सा एक ग्रुप में नहीं आएंगे। तो यूवेंटस आई थिंक, यूवेंटस पॉट टू में क्या? हाँ पॉट टू में यूवेंटस। अच्छा, देन उतना इशू नहीं होना चाहिए। पॉट थ्री क्या है? पॉट थ्री जरा बताना मेरे को। पॉट थ्री, डॉर्टमंड, साल्सबर्ग, हम्म। हम्म। शाख्तार डोनेट्स्क, इंटर मिलान, हम्म। नापोली, ओके। स्पोर्टिंग, नापोली। स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग। बायर्न लेवरक्यूजन और बेंफिका। So it can be like Barcelona, Bayern, Inter Milan also. पॉट थ्री में, पॉट थ्री में आ सकता है ना इंटर, ऐसे ही आता है ना, 1 2 3 4 करके ही आता है ना। हाँ तो पॉट फोर भी है, बट उसमें छोटे टीम्स है, ब्रूज है, सेल्टिक है, हाँ मक्का मतलब एक कोई मकाबी छोटा, हाइफा है, हाँ विक्टोरिया। हाँ और वो छोटा कोई टीम तो डाल ही देंगे तो वो उसमें करेक्ट करेक्ट। ग्रुप ऑफ डेथ में। और एक पॉसिबिलिटी, बायर्न, हम्म। एटलेटिको, फिर हम्म। इंटर मिलान, और चौथी टीम यह बहुत ही जबरदस्त होगा, बायर्न, एटलेटिको, इंटर हम्म। और अच्छा अच्छा लग रहा है अच्छा। और यू कैन या। ऑल्सो दे, you could also go for Ajax, Liverpool, in Dortmund and fourth club. That also be interesting. Of course, Liverpool या टॉप दैट विल बी करेगा, आल्सो। बट या। सेकंड प्लेस के लिए Ajax और डॉटमंड के बीच में बहुत टफ होगा। आई थिंक हम्म। ये रिमेम्बर, Ajax ने डॉटमंड को मार निकाला था,
लास्ट सीजन। यस, तो इस बार उल्टा नहीं हो जाए। ग्रुप स्टेज ग्रुप स्टेज से या बाहर निकले, हाँ एक बार उल्टा नहीं। आयक्स आर विदाउट द या मैनेजर एंड मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, तो हो भी सकता है। हो सकता है। बट बड़ा आई फील बारसा को पीएसजी या बायर्न मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। Yeah, PSG तो नहीं मिला, पीएसजी you know, I don't want PSG personally because you know, like I do not want Messi to come at Camp Nou and score a hat trick against Barcelona. व्हाट पॉट आर मैन यूनाइटेड इन बीट पॉट भाई, क्यों जख्म पे नमक छिड़क रहे हो भाई? हम खेलेंगे भाई वेडनेसडे नाइट, ट्यूसडे वेडनेसडे में क्या मजा है भाई? जो मजा थर्सडे नाइट में है ना, वो मजा किसी चीज में नहीं है ना। वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो क्या है, तो ठीक है यार। जो थर्सडे नाइट्स में जो मजा है ना, वो मजा किसी में भी नहीं है। और भाई तुमको तो मालूम ही होगा, फरवरी में तुम भी तो हम्म खेले थे थर्सडे नाइट यूरोपा लीग हम्म, में। बात तक खेले, लेकिन व्हाट बात तक खेले। व्हाट विल बी द टफेस्ट? हाँ जय, टफेस्ट आई थिंक, अगर टफेस्ट मुझसे पूछो तो मैं बोलता हूँ, रुको, टफेस्ट होगा पीएसजी, लिवरपूल, हम्म इंटर मिलान और नापोली एंड अ फोर्थ क्लब। हम्म, तो दैट विल बी द टफेस्ट वन। पीएसजी लिवरपूल एक ग्रुप में, तो मजा आ जाएगा, बस तोड़फोड़ हो जाएगा ग्रुप, तोड़फोड़ ग्रुप। या फिर मैन सिटी एंड बारसा इन सेम ग्रुप, बस अगेन अ तोड़फोड़ ग्रुप। could be। एमशे बोल रहे ओ हो यूरोपा सॉन्ग इन वेन्स इन इट। ओ हो, मुझे तो अभी भी हाँ, याद है। हम्म, बट मजा तो है। तो बट आई थिंक somehow I think हम्म, if ये what is his name Anthony का deal goes through, then I think you हम्म, guys should be able to win the Europa League. I think this is a देखते देखते भाई, आर्सेनल भी है यूरोपा लीग में, that's true. आर्सेनल भी है। Fortunate. ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, सैमुअल उमटीटी जॉइंस लीड्स, इट्स डन, दे विल पे अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज सैलरी। भाई उमटीटी गया भाई, बट अच्छी बात सैलरी है। तो लीज थोड़ा ही भरेगा, मेजोरिटी सैलरी बारसा ही कवर करा अभी भी। तो मुझे लगता है ना, अगर बारसा बट कवर कर रहा है तो नहीं, उनको बट हेल्प हम लोग करेगा को रजिस्ट्रेशन we में। are not getting any sort of like amount ना, like transfer fee। लोन पे ऊपर से मेजोरिटी, तो मतलब ये तो बिना मतलब का लोन है, यूजलेस लोन है, कुछ काम का लोन That's true. नहीं है। लियोन हैव रिजेक्टेड 50 million bid including bonus from West Ham for Lucas Paqueta. The French club Hmm. wants 60 million. This is as per Lake, Hmm. फ्रेंच आउटलेट है। Like that। तो फ्रेंच आउटलेट Hmm. लियोन का न्यूज में थोड़े हाँ, रिलायबल हो सकते हैं, बट yeah। लेट्स सी। बेनफिका ने एक प्लेयर साइन कर लिया है, क्या नाम है, ऑर्सनस, पता नहीं कहाँ का है, Hmm. बट ट्विटर पे ऑल ओवर है बेनफिका। आई थिंक नॉर्वेजियन प्लेयर है। MC क्या लिखता है, बिफोर ब्रिंग वी ए गो, मैन सिटी, क्या ब्रिंग बोल मैन रहा है, एक सिटी मिनट, एंड बारसा। हाँ, ब्रिंग मैन सिटी एंड बारसा ये ब्रिंग मैन लिखा। सिटी एंड बारसा एंड यूएफए बाल्डी नीड्स सीरियस हम्बलिंग। अरे रे 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 रे। सबको ही वाली क्या बात है। गणपति बापा का चमत्कार, उमटीटी को भी जॉब लग गया। हाँ भाई, उमटीटी को जॉब फाइनली लग गया। क्रिस्टियानो यस, रोनाल्डो से, मार्टिन ब्रेथवेल को भी लगा। भाई अब हमारे साथ देखो कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या? बारसा की जर्सी पहन के वो भी। हाय, कैन आई हैव एमओडी करी? एमओडी की बात है भाई। अरे भाई, क्या मैड ओवर डोनट्स, एमओडी अच्छा। करी। अच्छा, थोड़ा करी, ये थोड़ा टीज कर रहे करी हैं, क्यों भाई? थोड़ा टीज कर रहे हैं भाई, ये भाई अच्छा, अरे जाने छोड़ो, दो भाई, थोड़ा टीज छोड़ो कर उसको। रहे हाँ, अच्छा छोड़ो। बट एनीवेज, हैं। और like भाई, coming back to the UCL, क्या लग रहा है, like what will be the toughest team to probably face this year? What do you think? आई थिंक पीएसजी, PSG। नॉट बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द न्यू हम्म मैनेजर और उनका जो हम्म, स्पोर्टिंग सेटअप जो अभी हुआ है, द प्लेयर yeah। दैट हैव रिक्रूटेड एंड द मैनेजर एंड द स्पोर्टिंग डायरेक्टर इज आल्सो गुड। So PSG might be हम्म one of the players that one of the teams that will be difficult to beat. एमशेज भाई यहाँ भी जॉब मांगने आ गया, जॉब नाल्डो।
PSG, Man City look favorite. Man City, हाँ हो Absolutely. सकता है. Now they've got Erling Haaland, so missing a Yes. number nine. So I think one of the another team which looks pretty favorites to win the Champions League. But yes, बहुत ही difficult होगा. मजा आएगा देखने के लिए. And I think though you should not count out Liverpool and Chelsea. I know they've Mm. not started well, but Yeah. again, these Never teams have know. fantastic managers, and knockout games जो होता है ना, it's all about how tactically you are well built. You know, who thought Real Madrid could win the Champions League? Pure That's true. tactically जीते वो लोग. They played to their Yeah. strengths. They knew what their weaknesses were, and they had a plan. You know, बहुत लोग ने criticize किया. मुझे बहुत गुस्सा आता है. You know, when people like Stevie Nicol, फिर वो क्या नाम है, ESPN के कुछ लोग बोलते हैं कि Real Madrid didn't Alejandro deserve to Moreno. win the Champions League. अरे क्या जरूरत है यार, मतलब they beat PSG, they beat Mm. Chelsea, they beat Mm. Liverpool, they beat Man City. I mean, they Mm. beating big teams. अभी इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? फ्लूक एक होता है. जैसे चलो फ्लूक में उन्होंने PSG को हरा दिया, बट बाद में चेल्सी को Mm. हराया, बाद में मैन सिटी को हराया, बाद में लिवरपूल को हराया. अरे यार, छोटी टीम्स नहीं है ये वन ऑफ द That's बेस्ट true. टॉप टीम्स इन यूरोप है. यू हैव टू गिव Yep. देम सम क्रेडिट. Give the credit where it, Mm. of course they played a football that was not Yeah. very attacking and convincing because they didn't have those kind of players. So they played to their strengths and full respect to them. अगर तुमको लगता है तुम्हारा हिसाब से ही खेलना चाहिए, क्या बोलते Mm. हैं, फुटबॉल योर स्टाइल, ऐसा नहीं होता ना. एवरी टीम हैज देयर ओन Mm. स्टाइल ऑफ प्ले. तो इफ यू कांट यू नो एक्सेप्ट दैट, तुम्हें लगता है कि नहीं ये डिजर्व नहीं करती, देन फुटबॉल इज इन फॉर यू. एज सिंपल एज इट Yeah. इज. बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब अन जरूरत नहीं है. Yeah, criticism तो बायस मतलब ठीक लगते है, हैं उनको. but that having that some sort of like confirmation bias, I mean information, हम्म. हाँ confirmation bias ही बोल सकते हैं. Is very, I mean downright stupid मेरे हिसाब से तो. म्यूनिक स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ अंडरडॉग हु कैन नॉक देम आउट अगेन. भाई बायर्न म्यूनिक तो Could तोड़ be. रहा है मुझे बंडसलीगा में. लगता है हम्म, 500 गोल मार देंगे इस सीजन. हाँ. ना Could be. क्लॉप्स नॉट विनिंग इट. चेल्सी से ज्यादा चांसेस स्पर्स का है. आई थिंक PSG, मैन सिटी, बारसा इन द ऑर्डर. भाई ने बारसा बोल दिया भाई. Have to see man. हाँ. Fuck it. We are in for sextuple. अच्छी अरे बात है, भाई, अच्छी बात है. अच्छे अच्छे At least होप होप लगाना अच्छी बात है. I'm just hoping like we should win one trophy. If not for champ, see हम्म. I'm not counting the Champions League. At least we win the league or probably the Copa del Rey. हम्म. I'm at least happy for that. But या Champions गुड League, I गुड. आई don't मीन, see. I don't see there's a chance for Champions League till the time the midfield and the defense get very much like fixed and they are like very well coordinated. करेक्ट. मिडफील्ड थोड़ा, इफ यू Hey, लीव matlab, आउट it is good. बुस्केट्स. It is good. अच्छा है. I'm not saying it's like totally bad, but एक्सपीरियंस नहीं है, that coordinate एक्सपीरियंस नहीं. exactly there needs to be a chemistry. बुस्केट्स अकेला है, एंड बुस्केट्स इज एजिंग, ही नॉट गेटिंग यंगर. So that's the issue with Barcelona, and Real Hmm. Madrid are flying. Absolutely. Yeah. I mean, the way they are playing, उनको मतलब अभी लास्ट गेम देखा, कैसेमीरो गया, फर्क ही नहीं पड़ा. Too many steps Yes. up, and what Real Madrid have is people don't realize it. Yes, Benzema is fantastic, and Alaba Hmm. is fantastic, and That's true. Cruz and Modric are good, but above all, Hmm. they've got a brilliant manager who has Ancelotti. so much Yeah. experience. He knows how to handle each and every situation, and that's what Real Madrid have a big advantage. So, the That's manager true. बहुत ही experienced है, multiple trophies in different countries he's won. Yeah, I think he's won the league in every country, almost top league. Italian Serie A जीता है, Premier League चेल्सी के साथ जीता है वो. Yeah. I think he's won the league with Real PSG के साथ Madrid. भी जीता है. PSG के PSG साथ के भी साथ जीता है. also. Bayern जीता है. I mean that Yes. kind of an experience when you have a manager who has इतना सारा But he experience, was kicked out. और वो But भी he was winning kicked out experience. from Bayern, by the way. But he has a very poor record in having like league trophies. Hmm. But even though like in cup games he has been very phenomenal. That you have to give him very some like that respect that he deserves. Now we'll क्या take बोल रहे हैं? Remontanda at Anfield and Paris. Now we तो will पहले take मैच तो हो जाए मेरे Remontanda. भाई.
पहले पहले मैच तो हो जाए. I hope we I meet hope we. PSG. That Messi lad needs some humbling. नहीं यार. We'll meet Bayern. It will be 78-77 to Barca in final. बाप रे. भाई यार ये तो फीफा स्टोरी डाल दे सीधा. सही है भाई ठीक आगे. है, guys. I think time is already up. We've come to the end of Yeah. our show. We missed Prashant today. I'm sure he Yes. must have something urgent. That's why he couldn't He, attend the stream. he's smoking Liverpool tears as England man कहते हैं. Or Agrim, you want to add anything? Well, I'm just hoping. I mean, looking forward for the tomorrow's draws for the Champions League Hmm. and Europa League as well. And it will be on my Guys, channel, by the way. Agrim Bhai is doing a stream tomorrow for the Champions League, so make sure you Yeah. join in. We will be. Yes. I'll join a bit late. Prashant and Agrim Bhai will be there, so make sure Yes. to subscribe to my channel, subscribe to his channel, and Yes. let's have conversation on comment section. So Absolutely. it's fun when you have conversation, when you're speaking to each other, get to know each other, Absolutely. making new friends, and Exactly. talking about football is Yes. what excites all of Yes. us. And Yes. let's make sure to go live tomorrow and join in for Agreem by stream, and we'll Yes. react together. We'll sell it. Yes. जो भी ग्रुप That's what ऑफ is डेथ required. हुआ या इजी ग्रुप, बारसा या लिवरपूल, किसको भी इजी ग्रुप मिला या टफ टफ ग्रुप मिला, साथ में रिएक्ट करेंगे, Yes. साथ में दुख बांटेंगे. Yes. So Yes. thank you We'll guys. do that. Make sure to Absolutely. smash a like on the video, subscribe to our channel, Yes. and we'll Yes. see you tomorrow on Agrim Bhai's channel for the Champions League draw. Good night. Take care of yourselves. Bye for now. Ciao. Take care.